हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल बीआर ट्यूटोरियल पिला माने आशा करछि समस्ते भलरे थिबो। टुडेज टॉपिक इज ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट ऑन ट्रांसफॉर्मेशन। बिफोर ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट and Avery et al.'s experiment, everybody thought that genetic material is a protein, but the proof is not there whether protein or nucleic acid or carbohydrate or fat or lipids, which biochemical acts as genetic material. So there was no proof of that. Okay. So Griffith's experiment was the first proof that DNA is the genetic material. Okay. So first we try to understand about Griffith's experiment. What is Griffith's experiment? Griffith was a British doctor in 1928. He did research on the pathogenicity of bacteria Okay. In 1928, he studied on the bacteria Diplococcus pneumoniae, or its synonym is Streptococcus pneumoniae. Another name also pneumococcus. So तमें भाविबन जे Diplococcus pneumoniae कोठी लेखा हिथिबो को बही रे कोठी लेखा हिथिबो Streptococcus pneumoniae कोथे मते pneumococcus लेखा हिथिबो. This all are same bacteria. तो पैथोजेनिसिटी मीन्स यही जो बैक्टेरिया कौन पैथोजेनिक रोल अच्छी. And he found that this bacteria causes pneumonia in many mammals and death occurs. Okay. So his experimental material was a mice. Musa ऊपर से research करिथिले. And he studied about various strains of this bacteria. है ना, various form strain तक कहते various strains of bacteria Diplococcus. अच्छा, coccus माने जानती हो. Bacteria are classified according to the shape. Bacillus माने एंती रॉड शेप रहती हो. कोकस कहले स्फेरिकल माने. डिप्लोकोकस माने दुईटी लेखा कोकस बैक्टेरिया कंबाइंड लेके मिसिकी लागी रही थांती और कॉलोनी वाली ताको डिप्लोकोकस कहते. तो ये जो न्यूमोकोकस बा स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टेरियाटी एमती गोटे कोकस टाइप रो बैक्टेरिया माने स्फेरिकल शेप रो बैक्टेरिया और दुईटी जोड़ी जोड़ी ही थांते से माने. हैला, तो यार गोटे रिसर्च कले जेतेबेले यार विभिन्न स्ट्रेन उपरे बा विभिन्न टाइप उपरे, एंड ही फाउंड दैट देयर आर टू स्ट्रेन्स ऑफ दिस बैक्टेरिया. गोटे ले कोन एस स्ट्रेन बा एस टाइप आ गोटे आर टाइप. ओके, टू स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टेरिया ही फाउंड आउट. एस टाइप माने स्मूथ टाइप. स्मूथ टाइप कहीं कहे ना, व्हेन he cultured this type of bacteria in a petri dish देखी लैबोरेटरी. अच्छा, पेट्री डिश से कल्चर कले तार जो कॉलोनी फॉर्मेशन है कॉलोनी जो आउटलाइन टा एमती स्मूथ रहा. कॉलोनी आउटलाइन टा एमती स्मूथ रहा से ना देले से स्मूथ स्ट्रेन बा एस टाइप रो स्ट्रेन है. ये जो स्मूथनेस टा कहीं आसूची ना, दिस स्ट्रेन बैक्टेरिया हैव ए म्यूकस कोट outside the cell wall. है. ये जो स्मूथ कॉलोनी होची कॉलोनी माने से कौन बैक्टेरिया ये इनोकुलेसन कला पर से तार ग्रोथ हम. ग्रोथ है से कौन गोटे बैक्टेरिया कि दुटा बैक्टेरिया आम धर इनोकुलेट कर
ସେତେ କ'ଣ ତାର ସେଲ୍ ଡିଭିଜନ୍ ହେଇକି ନମ୍ବର ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିବ। ଆଉ ତାର ଯେଉଁ କଲୋନି ଗୋଟେ ଫର୍ମେସନ୍ ହେବ, ତାର ଯେଉଁ ଏଜ୍ଟା ଧାରଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ମୁଥ୍ ଦେଖାଯିବ। and that smoothness comes due to a mucus coat present outside the cell wall। ମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ସେ କୋକସ୍ ଟାଇପ୍ର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ତାର ଏଇଟା ହେଲା ସେଲ୍ ୱାଲ୍, ତା ବାହାରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଏମିତି ମ୍ୟୁକସ୍ ଲେୟର୍ ଗୋଟେ ଥିବ ହେଲା, ଗୋଟେ ମ୍ୟୁକସ୍ ଲେୟର୍ ଥିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାର ଯେଉଁ କଲୋନିର ଏଜ୍ଟା ସ୍ମୁଥ୍ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆର୍ ଟାଇପ୍ର ଆଉ ଦେଖିଲେ କିଛି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଅଛି ନ୍ୟୁମୋକୋକସ୍ର ବା ଷ୍ଟ୍ରେପ୍ଟୋକୋକସ୍ର, ତାର ଯେଉଁ କଲୋନି ସେ ଯେତେବେଳେ କଲଚର୍ କଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ କଲୋନିଟି ହେଲା ସେ ଦେଖିଲେ ତାର ଯେଉଁ ଏଜ୍ଟା ଏମିତି ଟିକେ ରଫ୍ ହେଲା, ଏମିତି ଟିକେ ରଫ୍ ଆସିବ। କଲୋନି କଲଚର୍ କଲେ ତାର ଧାରଟା କଲୋନିର ଏମିତି ରଫ୍ ଆସୁଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରଫ୍ ଆସୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଦିସ୍ ଆର୍ ଟାଇପ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରେପ୍ଟୋକୋକସ୍ ଦେ ଲ୍ୟାକ୍ ଦିସ୍ ମ୍ୟୁକସ୍ କୋଟ୍ ହେଲା। the mucus coat outside the cell wall is absent in R type। ओके, तो ताମାନେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ନ୍ୟୁମୋକୋକସ୍ ବା ଡିପ୍ଲୋକୋକସ୍ର ଦୁଇଟି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ସିଏ ପାଇଲେ। ଗୋଟେ ହେଲା ଏସ୍ ଟାଇପ୍ର ଆଉଟର କୋଟ୍ ଗୋଟେ ଥିଲା ସେଲ୍ ୱାଲ୍ର ବାହାରକୁ, ଆଉଟସାଇଡ଼୍କୁ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁକସ୍ କହିଲେ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ପଲିସାକାରାଇଡ୍ ମାନେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ହେଲା କି। ପଲିସାକାରାଇଡ୍ରେ ତାର କେମିକାଲ ନେଚର ହେଉଛି ପଲିସାକାରାଇଡ୍। ତ ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁକସ୍ କୋଟ୍ ଥାଏ, ଯେମିତି ସ୍ଲାଇମ୍ ଲେୟର୍ ଭଳିଆ। ମାନେ ଆମର ଯେମିତି ଧର ଭେଣ୍ଡି ଧର କାଟୁଛେ ଆମେ ଗୋଟେ ଲାଳୁଆ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ବାହାରେ, ସେଟା ହେଲା ମ୍ୟୁକସ୍ ହେଲା। ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସ୍ଲାଇମ୍ ଲେୟର୍ ଗୋଟେ କୋଟ୍ ଭଳିଆ ଥାଏ ଚାରିପଟେ। ଏବଂ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦି ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ମ୍ୟୁକସ୍ କୋଟ୍ ଏସ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆସ୍ ଆର୍ ଭାଇରୁଲେଣ୍ଟ ହେଲା। ଏ ଯେଉଁ ଭାଇରୁଲେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ, ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ କଜ୍ ଡିଜିଜ୍ ନିମୋନିଆ ହେଲା। ଆଉ ଆର୍ ଟାଇପ୍ ହୁଇଚ୍ ଲ୍ୟାକ୍ସ ଦ ମ୍ୟୁକସ୍ କୋଟ୍, ଏସ୍ ଟାଇପ୍ର ଆମର ମ୍ୟୁକସ୍ କୋଟ୍ ଥାଏ, ଆର୍ ଟାଇପ୍ଟା ହେଉଛି which lacks the mucous coat, it is avirulent। okay, R type strain जो bacteria it cannot cause pneumonia, but S type bacteria can cause pneumonia। From his experiment he found that two types of strains are present in streptococcus, that is one S type have mucous coat outside the cell wall and it is virulent, and this virulency comes from this due to this mucous coat, the presence of the mucous coat। But the R type which lacks the mucous coat, it is avirulent and it is incapable of making disease pneumonia। okay, so let's explain about his experiment। देख फास्ट के से कौन कले, he took virulent living S3 type of bacteria first। okay, फास्ट से कौन नेले गोटे केस रे एटा हला हमर लिविंग S3। एक्चुअली जो R आउ S स्ट्रेन रो मध्य आउरी सब टाइप अछि, माने S रो मध्य 1 2 3 एमती सब टाइप अछि, R रो मध्य सेमती 1 2 3 सब टाइप अछि। बट ग्रिफिथ टुक S3 एंड R2 है, R2 टाइप रो नहीं थिले और S रो 3 टाइप जोटा सही टाइप रो बैक्टीरिया से नहीं कि तापर एक्सपेरिमेंट करथिले। तांकर एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है कौन माइस। ओके, तो इन फास्ट केस ही टुक भाइरुलेंट जोटा आमर एस भेराइटीटा केमी जानले से भाइरुलेंट ना से जानिले जे लिविंग S3 बैक्टीरिया नियागला एवं ताकू इंजेक्ट करले सी कोठी माइस को, माउस रे इंजेक्ट कले कौन रिजल्ट देखिले, निमोनिया अकर्ड माने डिजीज अकर्ड एंड माउस डाइड। ता बॉडी रो S3 रिकवर कले। अच्छा, सेकेंड केस रे कौन कले ना नॉन भाइरुलेंट जोटा आम जानिले जोटा परे अवश्य जानिले, आग तो एक्सपेरिमेंट कला परे ही जना पड़ला जे एस टा भाइरुलेंट टाइप आर टा नॉन भाइरुलेंट टाइप। सेकेंड केस रे कौन कले ना लिविंग R2 स्ट्रेन रो बैक्टीरिया इंजेक्ट करा हला काको माइस को, माइस इंजेक्ट कला परे देयर विल नो डिजीज एंड माइस सर्वाइव्ड हैला। एंड
S3 type bacteria not recovered from this mice. Okay. Next third case रे से कौन कले, in third case he took heat killed S3 bacteria को heat द्वारा ताको मार दिया गला एवं से heat killed S3 bacteria was injected into the mice and he found that there will be no disease in mice and mice survived. Hello? And S3 type of bacteria not recovered. Okay. Then fourth case रे से कौन कले ना a mixture of heat killed S3 plus living R2. देखा living R2 होची ए virulent जोटा कि डिजीज करी नथिला. हीट किल्ड S3 मध्य डिजीज करी पारि नथिला हला. अच्छा एई दुईटी रा मिक्सचर से नेले कोन लिविंग R2 आउ हीट किल्ड S3 जो दीटा कि इंडिपेंडेंटली जेतले इंजेक्ट करा हेतिला से माने डिजीज करी पारि नथिले. कंबाइनली नेले से इंजेक्ट कले ताको माइस देहरे आ कौन देखिले रिजल्ट देखिले जे निमोनिया अकर्ड एंड माइस डायड. सो सी ही एस्टोनिस्ड ऑन द रिजल्ट. ए बड़ा रिजल्ट से एक्सपेक्ट करू नथिले काहे ना जेतु ये इंडिपेंडेंटली कौन डिजीज करी नथिला एथिया मध्य डिजीज हे नथिला जेतुटा हीट द्वारा किल्ड हे जैछि माने हीट द्वारा ताको डेड कर दिया हेछि. बर्तमान दीटा जाक मिक्स हो गला ताहले कौन पाई एठी निमोनिया हैला काना R2 तो इनकैपेबल ऑफ मेकिंग डिजीज एंड बिकॉज इट लैक्स द म्यूकस कोट हैला. अच्छा he conclude that there must be some factor present in the heat killed S3 which is absorbed by the living R2 bacteria and it transforms the living R2 bacteria into S3 form. तामाने S3 केमिति होबो ना लिविंग जो R2 रे त हमर म्यूकस कोट न थाए और S3 रे म्यूकस कोट थाए. तामाने जो ट्रांसफॉर्म जो मटेरियल टी से अब्जॉर्ब करिछि कोथरो हीट किल्ड S3 रु सेटा निश्चित भाव जेनेटिक मटेरियल हेतिबो. दैट मस्ट बी ए जेनेटिक मटेरियल बिकॉज इट चेंज द कैरेक्टर ऑफ द बैक्टीरिया. अब को चेंज कला ना से जो फैक्टर टी एंटर कला लिविंग R2 भीतर को डायरेक्टली अब्जॉर्ब कला से एंड इट हेल्प्स टू सिंथेसिस द म्यूकस कोट अराउंड द R2 bacteria so that it is converted into S3 form and it is capable of making disease. So mice died and he named it transforming principle and the process known as transformation. Transformation बुझिला बे माने कोनोसी गोटे फैक्टर जोटा कि ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर कोनोसी गोटे बायोकेमिकल any biochemical present in the heat killed S3 which is absorbed by the living R2 bacteria and transform it into S3 form so that it becomes virulent and the mice died. Okay, but he doesn't experiment on the nature of but Griffith didn't know the exact nature of that biochemical of the transforming principle. Okay, तो यहाँ एक्सपेरिमेंट एतिक सरला. ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट है कौन सी से जानिले जे कौन सी गोटे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जोटा कि हीट किल्ड S3 रो लिविंग R2 को एंटर करिछि एवं ताको कन्वर्ट करिछि ट्रांसफॉर्म करिछि S3 फॉर्म को सो दैट इट बिकम्स वायरुलेंट हैला. किंतु से ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल रो एक्जेक्ट बायोकेमिकल नेचर विषय से किछि एक्सपेरिमेंट करि नथिले आउ हैला. फर्दर एक्सपेरिमेंट से कर नथिले. लेटर इन 1944 three scientists Avery, MacLeod and McCarthy. These three scientists they
studied on detail about this transforming principle of Griffith and found the exact chemical nature of this transforming principle. So what they did, they cultured the R2 bacteria in a test tube in culture medium. Then they extract all the compounds of S3 bacteria, that is proteins, RNA, DNA, जोटा कि सेमाने डाउट करथुले जे एटा ही जेनेटिक मटेरियल हेई पारे। तो प्रीवियस टू 1944 एवरीबॉडी थॉट दैट प्रोटीन्स मे बी द जेनेटिक मटेरियल, से प्रोटीन्स एक्सट्रैक्ट कले आ RNA DNA न्यूक्लिक एसिड मध्य सेपरेटली एक्सट्रैक्ट कले। तो गोटे कल्चर मीडियम रे से कौन कले ना R2 सहित R2 कल्चर मीडियम रे प्रोटीन्स देले फ्रॉम S3 है। तापर आउ गोटे कल्चर मीडियम रे R2 बैक्टेरिया नेले कल्चर कराला और से कल्चर मीडियम सहित RNA फ्रॉम S3 ऐड कराला। एंड थर्ड गोटे रे कौन कराला ना कल्चर मीडियम निहाला R2 सहित DNA ऑफ S3 ये दिगला। आउ गोटे रे कल्चर मीडियम सहित DNA ऑफ S3 सहित गोटे डीएनएज एंजाइम भी दिगला है। अच्छा ये फास्ट जो सी देले प्रोटीन फास्ट केस रे देखा जो सी R2 कल्चर मीडियम रे सी प्रोटीन्स ऐड कले कौन S3 रु है। S3 रो कौ कंपाउंडटा जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन करूटा तो आइडेंटिफाई करा मेन एम थिला। तेणु सी कौन कले ना S3 रो प्रोटीन सब एक्सट्रैक्ट करके ऐड कराला ये करि कि ना कौन देखिले ताले रिजल्ट कौन देखिए ना ये R2 रो किसी ट्रांसफॉर्मेशन हैला नहीं है। देयर विल बी नो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ R2। देन सेकेंड जो केसटा सेकेंड केस रे से कौन कले ना R2 कल्चर मीडियम रे RNA दियाला S3 बैक्टेरिया रो फॉर्म रो सेठी मध्ये सेमती देखिले कौन देयर विल बी नो चेंज इन R2 फॉर्म R2 स्ट्रेन है। तेणु ये मध्ये नुहे प्रोटीन नुहे RNA भी नुहे जना पड़ला जेनेटिक मटेरियल। थर्ड केस रे से कौन करथिले कल्चर मीडियम सहित S3 स्ट्रेन रो DNA ऐड करथिले। DNA ऐड करथिले जोटी सेठी से देखिले सम R2 बैक्टीरियाज आर कन्वर्टेड इनटू S3 फॉर्म S फॉर्म किछि R बैक्टीरिया S फॉर्म को कन्वर्ट हो जाइछन्ते। ओके आउ गोटे केस फोर्थ केस रे एटा थर्ड केस आ फोर्थ केस रे कौन कले से ना सेठी कल्चर मीडियम रे DNA जो देइथिले से DNA देले ता सहित डीएनएज एंजाइम देले डीएनएज एंजाइम व्हिच डाइजेस्ट डीएनए मॉलिक्यूल है। तो डीएनए देइथिले ता सहित डीएनएज जेहेतु देले से डीएनए को कौन कला सी डाइजेस्ट करदेला। तेणु सेठी आउ R2 फॉर्मटा S फॉर्म को कन्वर्ट हो पारला नहीं। तो नो कन्वर्सन केवल ताले कन्वर्सन कोठी हैला ना जोठी केवल डीएनए दिया हैला। So from their experiment they conclude that the genetic material by जो transforming principle of Griffith which may be genetic material and that genetic material is DNA है। But some biologists don't agree with their result है। But this was the first experiment to prove that DNA is the genetic material. Okay. तो आमे आसीबा डिटेल आमे जदि गोटे लॉन्ग क्वेश्चन आसे ए चैप्टर ऊपर तो गोटे लॉन्ग क्वेश्चन आसीबो डिस्क्राइब ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट ऑन ट्रांसफॉर्मेशन। ओके ताले आमे कोन लिखिबा आमे सेठी कोन लिखिबा ना फर्स्ट लिखियो ट्रांसफॉर्मेशन वाज फर्स्ट स्टडीड बाय ए ब्रिटिश डॉक्टर SF Griffith in 1928. He was studying pathogenicity of different strains of bacteria Streptococcus pneumoniae बा जोटा को pneumococcus भी कहते Diplococcus भी कहते which causes pneumonia in mammals. That bacteria has two strains S or smooth type and R or rough type है। When the S type bacteria was cultured in suitable medium they form smooth edge colonies that is due to a sheath of mucilage
बा से जोटा म्यूकस कही म्यूसिलेज और म्यूकस पॉलीसैकेराइड्स जार केमिकल नेचर है पॉलीसैकेराइड माने गोटे कार्बोहाइड्रेट अराउंड देम द आर टाइप बैक्टीरिया forms rough edge colonies because they lack the mucilage sheath around them. S type bacteria are virulent, produce diseases, but the R type bacteria are non-virulent, cannot produce diseases. तापर आसवा कौन एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ took S3 and R2 type of streptococcus pneumoniae. Then फास्ट जो एक्सपेरिमेंट कौन कले लिविंग S3 स्ट्रेन इंजेक्ट इनटू माइस डाएट लिविंग R2 स्ट्रेन सेकेंड केस ने इंजेक्ट इनटू माइस लिव थर्ड केस रे कौन हीट किल्ड S3 स्ट्रेन इंजेक्ट इनटू द माइस लिव तापर आसला कौन हीट किल्ड S3 प्लस लिविंग R2 इंजेक्ट इनटू माइस डाएट. The fourth part of his experiment indicates that some R2 type bacteria were transformed into S3 type virulent strain, and this occurred perhaps due to absorption of some transforming principles by R2 type bacteria from heat killed S3 bacteria. Okay. This substance जोटा कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जोटा ऑब्जर्व है दिस सब्सटेंस enabled the R2 strain to synthesize a polysaccharide mucus coat and become virulent. This must be due to the transfer of genetic material जोटा कि गोटे कैरेक्टर चेंज करुच्ची माने सेटा गोटे जेनेटिक मटेरियल लेथिबो. However, the biochemical nature of genetic material was not proved from its experiment. Biochemical nature of transforming principle. Till 1944, the genetic material was thought to be a protein. The work of Oswald Avery, Colin MacLeod, and Maclean McCarthy on the transforming principles of Griffith's experiment proves that DNA is the genetic material. They purified biochemicals from heat-killed S3 type bacteria into three components, that is proteins, RNAs and DNAs. They add these components into separate culture tubes containing R2 bacteria. Okay. They found that only DNA can transform R2 strain into S3 strain. They also discovered that protein digesting enzymes, that is proteases, RNA digesting enzymes RNases, did not affect transformation. Addition to DNA digesting enzyme DNase inhibits transformation. जो DNA ऐड करथिले सेतल देखिले कोन हला ट्रांसफॉर्मेशन हैला एवं जो DNase ऐड करले सेतल देखिले आ ट्रांसफॉर्मेशन होउनी ता माने DNA डाइजेस्ट हे जेतले आ ट्रांसफॉर्म करि पालानी. So from this proof obtained that DNA is the genetic material. They concluded from this that DNA is the genetic material. So this is the first experiment which proves that DNA is the genetic material. And there is another experiment which proves that DNA is the genetic material, that is the Hershey and Chase experiment, which is a transduction experiment. I will discuss it in my next video about Hershey and Chase transduction experiment to prove that DNA is the genetic material. Okay. Thank you for watching. Subscribe my channel and भलो लगे लाइक कर शेयर कर सांग मानक जदि किसी एक्स्ट्रा टॉपिक उपर तुम मैंने चाहूच वीडियो प्रिपेयर करे तेणु मत कमेंट सेक्शन लिखि जनइब. थैंक यू.